Okay, assalamu alaikum everyone. Let's begin. So in our today's session, we are going to be discussing this paper, May June 2022, paper 1, variant 3. We're already done with the other two variants from this session. For paper 1, we did complete paper 1, 2, and also did the more difficult questions from the first variant as well, paper 1, 1. And today we will be doing some selected questions from this paper, paper 1, 3. You can let me know if there are any particular questions from this paper that you want me to do. Otherwise, I'll just be going through the paper and discussing the ones that look relatively more difficult to me. Okay, so that's the plan for today. You can also see the schedule for the next 4 days on my Instagram and also on the community page on YouTube. So tomorrow I'll be doing paper 3.3 from the same session. And then on Friday, I will be doing the two statistics variants, so paper 5.1 and paper 5.3. We're already done with paper 5.2. हम 5.1 और 5.3 के मुश्किल वाले questions कर रहे होंगे. और फिर Saturday को इंशाल्लाह we will be doing paper 4.1 and paper 4.3. उनके जो मुश्किल questions हैं वो कर रहे होंगे. ठीक है? So that's the plan for the next 4 days. Now, before we start, just a reminder to subscribe the channel if you haven't already done that. In the description below, you'll also find a lot of other useful content. I've posted all of my recordings for the crash courses that I recently did for paper 1, paper 3, M1 and S1. You can find the links to them in the description below. Also, there are some quick revision videos there, which a lot of people find helpful before exams. You can have a look at that as well. And you can also find the other yearly past papers that I've solved from 2021 and 2022. And also 2023 wale sare papers jo hai maine already kar diye hain. You can find the link for that playlist in the description below as well. Okay, walaikum assalam, Ahmed. So now let's begin with this paper, May June 2022, paper 1, variant 3, and discuss the relatively more difficult questions from this one. All right, so in the first part, and the first question, it says, the coefficient of x cubed in this expansion is 144. Find the possible values of the constant p. Now, it's not that difficult. It doesn't look that difficult, but it's a slightly different question. So let's actually do it and see what we get from this. Remember the formula that we have for binomial expansion. It looks like this: a plus b whole raised to power n, that equals a raised to power n plus nc1 into a raised to power n minus 1 into b plus nc2 into a raised to power n minus 2 b square, and so on. All right. So all you have to do is just input values in the formula. So you have p plus 1 over p times x whole raised to power 4. All right. Now, if you compare with the form that's given, a plus b, in place of a, आपके पास p आ रहा है, और in place of b, आपके expansion के, आपके expression के अंदर 1 over p times x आ रहा है. Okay. All you have to do is, in the form that you have on the right side, replace a with p and b with x over p. And also, the power here is 4. तो जहाँ पे n आ रहा है आपके पास formula के अंदर, n की जगह पे आपने 4 डाल देना. ठीक है? Now let's input values. A raised to power n. So that's p raised to power 4 plus nc1. So that's 4c1 into a raised to power n minus 1. That's p raised to power 3 into b, which is 1 over p times x. Yeah, just x over p will accept it. That's a simpler way of writing this, and you have to write it like that to make things simpler. X over p, that's the second term that you have here. So यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? X over p. All right. At this point, you can stop and see the pattern that's emerging in the powers of x. आपके पास सबसे पहले x की power 0 आ रही है. उसके बाद यहाँ पे second term में देखें, x की power 1 आ रही है. So remember, these terms always follow an arithmetic sequence. आपको कौन सी term चाहिए? X cube वाली term चाहिए.
उसने कहा जो एक्स क्यूब वाली टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज 144। तो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाली टर्म फाइंड करेंगे और उसके कोएफिशिएंट को 144 से इक्वेट कर देंगे। अब आपके पास x रेज़ टू पावर 1 वाली टर्म आ गई है, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी x पावर 2। आपको वो नहीं चाहिए, आपको x क्यूब चाहिए। तो वो टर्म क्या हो जाएगी, आप इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, दिस इज 4c1, द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 4c2, उससे अगली क्या हो जाएगी 4c3। दैट्स द वन दैट यू आर लुकिंग फॉर। p की पावर देखें इसमें क्या हो रहा होगा, पावर 4 है, फिर पावर 3 है, नेक्स्ट में पावर 2 आएगी, एंड देन द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी पावर 1, सो p पावर 1, और ये x ओवर p की पावर, इसमें x ओवर p होल स्क्वायर्ड आ रहा होगा और इससे नेक्स्ट टर्म में क्यूब आ रहा होगा, एंड दैट इज द वन दैट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, ये टर्म हमें चाहिए। इस टर्म को हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 4c3 is just 4 into p over p cube. You have p power 1 in the numerator, p cube in the denominator. So आपके पास denominator में p square आ रहा होगा, and then you have x cube here. And now what they said is that the coefficient of x cube is actually supposed to be 144. That means जो ये expression आपके पास है, this is actually supposed to be 144. ठीक है, तो आपके पास एक equation आ गई, and that is that 4 over p square should be equal to 144, right? You take p square to the other side, bring 144 here, and that is going to give you p square equals 4 over 144. You simplify that, and let me see what that gives you. 144 divided by 4, this simplifies to 1 over 36. Now you take square root on both sides. Remember, whenever you take square root, you have to put plus minus. So the value of p turns out to be either plus or minus 1 over 6. These are the two values of p that we get from this. All right, and that's what we were looking for in the first question. Okay, that was not that difficult, but so that's what we start from. Now let's move on and see if we have more difficult questions. Okay, so this is transformations involving trigonometry. Now this is interesting. Let's have a look at this now. Question number 2 from this paper. It says the diagram shows part of the curve with equation y equals p into sine q times theta plus r, where p, q, and r are constants. We need to state the value of p first of all. That's what we are going to start from. What is p supposed to be? P is the number that is multiplying outside sine here. Now remember what it affects in a trigonometric graph. Sine के ग्राफ का जो amplitude होता है वो वैसे क्या होता है, 1 होता है, right? क्योंकि अगर आपके पास ये फंक्शन है y equals sin theta, इसके बाहर कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है 1 होता है। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, for example p here, that becomes the amplitude of the graph. Now remember what amplitude is. Amplitude is the maximum distance from the baseline of the graph. Baseline क्या होती है, जिसके अराउंड ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है। तो आप देखें बिल्कुल मिडिल में जो आपके पास लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स दिस लाइन। अब इसके अराउंड आपका ग्राफ कितना ऊपर नीचे जा रहा है, आप देखें उससे आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। You see, you have 3 units here maximum on the upper side, and you have 3 units going down on the lower side as well. The maximum distance from the baseline, how much is that? That's 3 units. So the amplitude of this graph that you have here is 3 units. तो जो p की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो 3 होनी चाहिए। p should be equal to 3 here. Okay, now it says state the value of q. अब q क्या represent कर रहा होता है, देखिए अब अंदर q into theta, इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। You can either think of it as frequency, के जो नॉर्मल आपका इंटरवल है, जो नॉर्मल आपका पीरियड है ग्राफ का, उतने पीरियड के अंदर कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब साइन का पीरियड कितना होता है ओरिजिनली, साइन का पीरियड ओरिजिनली कितना होता है, 2 पाई होता है। तो आप देखें 2 पाई इंटरवल के अंदर 0 से लेकर 2 पाई तक कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। वेल 0 से लेकर 2 पाई तो आपका सिर्फ हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ जो Q की वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी हाफ होनी चाहिए। दैट्स वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस। आप फ्रीक्वेंसी का सोच सकते हो,
और another way of thinking about this is, remember, जो भी आपके पास अंदर आ रहा होता है, अगर आपके पास ये Q है, इस ग्राफ का जो पीरियड है, न्यू पीरियड ऑफ द ग्राफ is actually equal to the original period of the graph divided by this number that you have here. All right, that's the relation between the new period of the graph and the original period of the graph. अब original period आपका साइन के ग्राफ का क्या होता है? साइन के ग्राफ का original period रेडियंस में कितना होता है? It's 2 pi. Okay, नीचे आपके पास क्यों है? न्यू पीरियड, यानी ये जो ग्राफ आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इसका पीरियड कितना है? ये कितनी देर में अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है? ये ग्राफ अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है 0 से लेकर 4 पाई तक। तो इसका पीरियड कितना हुआ? 4 पाई होगा। तो यहाँ पे 4 पाई लगते हैं, और यहाँ से भी आपके पास Q की वैल्यू उस तरह से आ सकती है, दैट्स 1/2। ओके, सो यू कैन डू इट आइदर वे। आप पीरियड का भी सोच सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी का भी सोच सकते हो। पीरियड यहाँ पे क्योंकि डबल हो गया है, तो वहां पे 1/2 आना चाहिए। ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट सेज, सो आपको सिर्फ स्टेट करना है, इसके वर्किंग नहीं चाहिए आपको, so you just state 1/2 here and state 3 here. That's all that you have to do. Okay, now the next part says state the value of R. Now what about this number R? Remember, this represents the baseline of the graph. This represents the baseline of the graph, कि baseline आपकी कितनी ऊपर नीचे गई है। Originally जो साइन की baseline होती है, वो क्या होती है? y equal to 0. ओरिजिनली जो बेसलाइन होती है y equal 0 होती है। अब ग्राफ पे देखिए आप, आपकी बेसलाइन कहाँ चले गई है? ये येलो लाइन जो आपको नजर आ रही है, दिस इज द बेसलाइन ऑफ दिस ग्राफ, वो -2 पे चले गई है। तो आप क्या कहोगे? R की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? -2 होनी चाहिए। ओके, सो इफ यू understand the transformations that you have for these sine and cos functions, this becomes pretty straightforward. जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, जो बाहर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो बेसलाइन होती है, और फिर जो दरमियान वाला नंबर जो मल्टीप्लाई होता है अंदर, ये वाला, दैट रिप्रेजेंट्स कि आपके कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं ओरिजिनल पीरियड के अंदर। फ्रीक्वेंसी की तरह सोच सकते हो, या फिर आप सोच सकते हो कि पीरियड पे जो भी इम्पैक्ट हो रहा है ना, ये नंबर उसका रेसिप्रोकल होएगा। सो पीरियड आपका डबल हो गया, यहाँ पे 4 पाई हो गया है, तो पीरियड डबल होने का मतलब है Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/2 होनी चाहिए। So these are different ways of thinking about this. You can do it whichever way you're more comfortable with. Okay, so that's the part C that we have. All right, let's move on. Question number 3. Should we do this? Let's see. AP has this. Okay, let's do this. This is also not a pretty standard one. It's slightly different. So let's do this. And AP has first term 4 and common difference D. The sum of the first n terms of the progression is 5, 8, 6, 3. We need to show that the relation between n and D is this. अच्छा, अब ये AP है। AP के आपके पास sum formulas कौन से होते हैं? You have two sum formulas for AP that are given in the formula sheet. एक formula होता है half into n into a plus l, जिसमें l is basically the nth term, right? लेकिन यहाँ पे आपको D चाहिए इस रिलेशन में। D तो इस इक्वेशन में नहीं आता, so it's not a good idea to use this formula. It's better to use the other one, which looks like this. आप formula sheet में देखेंगे, it's half n into 2a plus n minus 1 times D. And this equation has both a and D. All right, a आपको पता है 4 है, और D के टर्म्स में आपको रिजल्ट चाहिए। तो आपने सिंपली क्या करना है, बस देखें सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 5, 8, 6, 3. SN की जगह पे 5, 8, 6, 3 डाल दें। हाफ n की वैल्यू आपको नहीं पता ऑफ कोर्स, into 2a, a की वैल्यू पता है, first term is 4, we know that a is equal to 4, that's given, so that's 2 into 4 plus n minus 1 times D. Keep it as it is because यहाँ पे देखें n minus 1 into D लिखा हुआ है ना, तो आपको eventually इस तरह की फॉर्म चाहिए एक साइड के ऊपर, तो आप इसको सिंप्लीफाई ना करें, leave it as it is. This is what we have. Okay,
Now what we can do is we can multiply 2 on the other side. What is that going to give us? 5863 into 2. And that gives us this number that we have here, 11726. अभी देखिए नीचे n भी आ रहा है, तो ये इस n को जाके हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं दूसरी साइड पे, ठीक है, इसी स्टेप के अंदर, divided by n. Now on the other side we have 8 plus n minus 1 times d. All we have to do now is take 8 to the other side, and that gives us n minus 1 times d equals 11726 divided by n minus 8. That's what we had to do in the first part. Okay. Now in the next part it says, given that the nth term is 139. Okay, so जिन terms का sum निकाल रहे हैं उनमें जो last term है वो क्या है? 139 है. We need to find the values of n and d given the value of d as a fraction. All right, so how do we think about this? Nth term बता दिया उसने. Nth term का formula क्या होता है? Remember that? ये formula sheet में दिया होता है. UN लिखा होता है, आप TN लिखें, UN लिखें. That does not make any difference. Let's say TN is equal to A plus n minus 1 times d, right? This is the nth term formula that we have for an arithmetic sequence. अब इसके अंदर हमारे पास क्या information है? We know the nth term is 139, so we can input that there. We know the first term, that's 4. N की value नहीं पता और हमें d की value भी नहीं पता. These two things are unknown. But from this, what we have is, we have another equation in terms of n and d, right? यहाँ से हमारे पास आ सकता है n minus 1 multiplied by d equal to 139 minus 4, that's 135. ऊपर देखिए उसने इस फॉर्म की एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें एक n minus 1 into d आ रहा है एक साइड के ऊपर, यहाँ पे भी वही आ रहा है. What we can do is we can just equate the right hand sides. We can equate this thing with 135 because दोनों n minus 1 into d के इक्वल है ना, तो आप बस वो यूज कर लें. So आप कहें 11726 divided by n minus 8, that equals 135. Okay, अब इसको सॉल्व कर लें. देखा बस क्या होता है, 8 जाके वहां पे ऐड हो जाएगा, वो बन जाएगा 143, फिर n हो जाएगा, आपके पास इवेंचुअली आ जाएगा n equals 11726 divided by 143. Let's see what we get from this. Okay, 11726 divided by 143, that is giving me 82. The value of n turns out to be 82. जब n आ गया तो d अब figure out करना is pretty straightforward because ये आपके पास एक equation है, इसको use कर लें. आप कहें 82 minus 1 times d equals 135. And now d equals 135 over 81, which turns out to be 5 over 3. ये आपके पास d की value आ गई. ठीक है, that's what we were looking for in the second part. All right. Sahafi, I'm sorry about that. I could not do any classes in the last week because of Eid. I had to travel. But I will be starting O-level papers from tomorrow, inshallah. Okay, so tomorrow, most likely I'll be starting. I'll post the schedule for that as well. But I'll be starting that tomorrow, inshallah. Okay. Question 11. Okay, question 11 हम करते हैं. Taha, you're welcome. It's really your choice. I would recommend that you do all 2022 and 2021 papers at least. In fact, 2020 से आगे at least जो 3 साल हैं इनके सारे papers आपको करने चाहिए. If you have time, सारे variants, because 2020 में syllabus change हुआ था, तो उसके बाद वाले सारे papers जो है ना, they are all relevant. उसमें आपको कुछ function transformations और equation of circle वगैरह के जो questions हैं वो आपको मिलेंगे सिर्फ इन्हीं papers में. And also composite functions के जो questions जहाँ पे वो domain और range का पूछता है, they're also quite complicated sometimes. तो वो आपको करने चाहिए.
Acha, let's move on. This was question number 3. Next we have function transformations again. Okay, so पहले जो था वो trigonometric functions की transformation थी, अभी इसने normal दूसरे function की transformation दे दी है. The curve with this equation y equals x squared plus 2x minus 5, it's translated by -1 3. अच्छा, -1 3 का क्या मतलब है? -1 means 1 unit left जाने और 3 means 3 units up. तो इसमें vertical translation भी है और horizontal translation भी है, दोनों चीजें हो रही है. We need to find the equation of the translated curve, giving our answer in the form y equals ax squared plus bx plus c. अच्छा, quadratic functions में ना, जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन फिगर आउट करनी होती है खुद से, जब आपको खुद से ट्रांसफॉर्मेशन फिगर आउट करनी होती है कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें आपको हमेशा स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, वरना समझ नहीं आती कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. ओके, जब भी आपको उसने इक्वेशंस दी हो और आपको इक्वेशंस देख के फिगर आउट करना हो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो रही है, यू ऑलवेज हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर फर्स्ट. लेकिन अगर उसने ट्रांसफॉर्मेशन बताई हुई है और आपको सिर्फ अप्लाई करनी है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. अब ये कैसे होगी? देखिए, एक तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 यूनिट लेफ्ट. इसका मतलब क्या होता है? रिमेंबर, अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, लेफ्ट पे जाने का मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन में हम अंदर क्या करते हैं, एक्स की जगह पे x प्लस 1 कर देते होते हैं, राइट? x की जगह पे x प्लस 1 करते हैं. लेफ्ट पे जाते हैं तो प्लस करते हैं हॉरिजॉन्टल में. और फिर वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, वी गोइंग 3 यूनिट्स अप, तो फंक्शन के बाहर हम 3 ऐड कर देंगे. तो एसेंशियली हमारे पास इस तरह का फंक्शन बन रहा होगा, बाहर 3 ऐड कर देंगे और x की जगह पे x प्लस 1 कर देंगे. सो इफ यू अप्लाई दैट इन दिस फंक्शन नाउ, y equals x square plus 2x minus 5, आपने करना क्या है, x की जगह पे आप क्या कर दो, x plus 1 कर दो. Okay, so it becomes x plus 1 whole squared plus 2 into x plus 1 minus 5. ये आपने कर दी, ये आपने अप्लाई कर दी हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन. ओके, वो होगी. अब जब वो होगी, अब आपने देखना वर्टिकल ट्रांसलेशन क्या है. वर्टिकल ट्रांसलेशन में आपको फंक्शन के बाहर 3 ऐड करना है. सो आप बाहर 3 लगा दो यहाँ पे, plus 3 like this. And now you can just simplify this because आपको कहा है कि final answer इस form में होना चाहिए. You would just simplify this and see what that gives you. X plus 1 whole square, that is going to be x square plus 2x plus 1 plus 2x plus 2 minus 5 plus 3. And now you can simplify this and see what that gives you. We have x squared, that's only one term. 2x plus 2x, that's 4x. And we have 1 plus 2 plus 3 minus 5, that is going to be plus 1. So we have x squared plus 4x plus 1. That is the final function that we get after this translation. देखिए, इसमें horizontal translation भी थी और vertical translation भी थी. ठीक है? All right, let's move on. Part B. Now it says the curve with equation x square minus 2x, x square plus 2x minus 5. So it's the same equation as before. It's transformed to a curve with this equation, 4x square plus 4x minus 5. Describe fully the single transformation that has been applied. Okay, so how do we think about this? अब कुछ लोग इसको फिगर आउट कर सकेंगे डायरेक्टली. अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली कर लें. अदरवाइज अगर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेना, उससे बहुत आसान हो जाता है. सो दैट्स योर चॉइस था. बट इसका स्क्वायर कंप्लीट करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा. अगर आपको नहीं समझ आ रही, फिर आप स्क्वायर कंप्लीट करें, उससे आसान हो जाएगा समझना. अदरवाइज इट्स बेटर टू डू इट डायरेक्टली इन दिस केस, क्योंकि एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है ना. अगर मल्टीपल होते हैं ना, फिर ज्यादा कंफ्यूजन होती. सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में आप फिर भी कोशिश कर सकते हैं इसको फिगर आउट करने की. अब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है, लेट्स थिंक अबाउट दैट. -5 इसको कोई फर्क नहीं पड़ा. ओके, सो दैट रिमेन्ड एज इट इज. अच्छा, 2x की जगह पे क्या हुआ है, 4x आ गया. नाउ दैट काइंड ऑफ टेल्स अस कि अच्छा, x को शायद हो सकता है 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट? बिकॉज अगर x की जगह पे यहाँ पे 2x आ जाए तो क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा. नाउ दैट इज गिविंग अस सम हिंट कि अच्छा, ये हो सकता है.
but you're not sure yet. आपको check करना पड़ेगा, अच्छा क्या पूरे function में इसी तरह से ये work कर रहा है? So you think about this as well, this term as well. अब यहाँ पे देखिए, अगर आप x की जगह पे 2x डाल दें तो क्या होएगा? You'll have 2x the whole square, and that gives you 4x squared, and that's exactly what they have here as well. And that kind of confirms the transformation that they've applied here to go from this original function y equals x squared plus 2x minus 5 to y equals 4x squared plus 4x minus 5 is something like this, कि जो भी पहले function था उसमें उन्होंने क्या किया है, x की जगह पे 2x कर दिया, x की जगह पे 2x कर दिया. So now you have to describe fully this transformation. Now how do you describe this? सबसे पहले सोचें ये horizontal transformation है, vertical है. Horizontal है because ये function के अंदर हो रही है. Okay, कौन सी transformation है? 2 से multiply कर रहे हैं. Multiplication या division जब होती है वो stretch होती है. So this is a horizontal stretch. Okay, this is a horizontal stretch. Now you can either write horizontal stretch, and that's okay, or you can write stretch along the x-axis. Okay, stretch along the x-axis or parallel to x-axis. There are multiple ways of describing this. So you can say this is horizontal stretch. That's one way of doing this. Or you could also say it's along x-axis. Now be careful, अगर आप ये multiple लिख रहे हैं तो बेहतर है वैसे एक ही लिखें, या हॉरिजॉन्टल लिखें या एक्स एक्सिस लिखें, उनके अगर इसमें से एक भी गलत हो गया ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिख दिया लेकिन इधर गलती से आपने वाई एक्सिस लिख दिया, you won't get marked for that because there will be a conflict and examiner would not know कि कौन सा जो है उसको कंसिडर करना है इसमें से. तो आप एक ही लिखें, दोनों में से एक चीज लिखें, ठीक है, that you are sure about. हॉरिजॉन्टल का अगर आपको श्योर है तो वो लिख दें, along एक्स एक्सिस का आपको श्योर है तो वो लिख दें. Don't write multiple descriptions, उससे फिर आपका मार्क कटने का ज्यादा चांसेस हो जाता है, ठीक है. वो ये नहीं करेगा एग्जामिनर के जो सही है वो मार्क कर दे, अगर दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो फिर वो मार्क नहीं देगा, बेशक उसमें से एक सही होता है, ठीक है. Now that's only one mark, okay. Horizontal stretch लिखने का आपको एक मार्क मिलेगा. Now you have to also write the stretch factor, okay. What is that going to be? Remember horizontal में उल्टा होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्ट्रेच फैक्टर क्या होगा इसमें, इसका रेसिप्रोकल. तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, फैक्टर का वर्ड लिखना जरूरी होगा अदरवाइज का मार्क कट जाएगा. स्ट्रेच फैक्टर इज 1/2. ओके, 2 का रेसिप्रोकल हॉरिजॉन्टल में उल्टा होता है, 2 से मल्टीप्लाई किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो फैक्टर होता है स्ट्रेच फैक्टर वो उसका रेसिप्रोकल होता है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस. Okay, let's move on. Ashraf, टाइम मैनेजमेंट का P1 में तो इतना इशू नहीं होता, बट इफ यू आर हैविंग दैट इशू, आप घर पे आपको कोशिश करनी चाहिए, टाइम योरसेल्फ, पेपर जो आप अटेम्प्ट करें टाइम करके करें, 1 hour 30 minutes, 1 hour 35 minutes, ये आपका टारगेट होना चाहिए घर पे, बिकॉज एग्जाम में जाएंगे तो आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है या कहीं पर स्टक हो सकते हैं. तो घर पे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यू शुड बी टारगेटिंग टू कंप्लीट पेपर 1 in 1 hour 30 minutes or max 1 hour 35 minutes. टाइम प्रैक्टिस करें उससे बेहतर होता है. अच्छा, we need to solve this equation. It's not that difficult. Should we do this? Let me just go through the rest of them as well, so we know हम कौन सा skip कर सकते हैं. अच्छा, ये भी हमें करना होगा, ये भी हम कर लेंगे. Okay, I think we'll have to do most of them, so let's just keep doing them. Let's do this one. Question number 5 then. 5a, let's try this. We have to solve this equation. 6 into square root of y plus 2 over square root of y minus 7. Now, how do we solve this equation? आप इसमें substitution use कर सकते हो, right? So square root of y की जगह पे कुछ और डाल दो. You can use u, for instance. Let's say let u equals square root of y. Okay. Now this gives you 6u plus 2 over u minus 7 equals 0. Multiply by u to get rid of the fraction, and that gives you 6u squared plus 2 minus 7u equals 0. Solve this
quadratic equation, remember ये आपको process दिखाना होता है. You can't write your answer directly from the calculator. ये आपको working show करनी पड़ेगी. Can we factorize this? Let's think about this. Let's actually write this in order first of all. So it's 6u square minus 7u plus 2 equals 0. 6 into 2 gives us 12. So हम factorize इसको कर सकते हैं. It's going to be 6u squared minus 4u minus 3u plus 2 equals 0. And the two factors that we get from this are 2u minus 1 and 3u minus 2. All right, and u turns out to be 1 over 2, or u turns out to be 2 over 3. And now let's put that substitution back. U was equal to square root of y, so we get square root of y equal to 1 over 2, or square root of y equal to 2 over 3. Now, since we're looking for the value for y, dono sides ko square kar dein, and that is going to give you y equals 1 over 4 here, and y equals 2 over 3 ka square, that's going to be 4 over 9. These are the two values of y that we get from this, and these are your final results. Okay. Y equals 1 over 4 or y equals 4 over 9. Let's move on. Part B of this, it says hence solve this equation. Now, when it says hence, that means you have to use the previous part somehow. Now, how is that related to this? Compare the two equations. क्या इसमें आपको connection लग रहा है? Square root में पहले y था, यहाँ पे क्या हो गया? tan x आ गया. y की जगह पे tan x आ गया. तो जो आपकी पहले y की वैल्यूज आई हैं, आप कह सकते हैं कि वो इस इक्वेशन में tan x की वैल्यूज आएंगी. So you get two equations from this. You get tan x equals 1 over 4, or you get tan x equals 4 over 9. And the interval that you have is from 0 to 360. In दोनों equations को आपने solve करना है for x between 0 and 360. All right. Now, for the first case, let's find the basic angle. We say tan alpha equals 1 over 4. Let's see what the basic angle turns out to be. You see, the angle is in degrees. तो उसका tan inverse निकालते हैं. Calculator आपने ensure करना है आपका calculator degrees में हो. That's really important. Tan inverse of 1 divided by 4. And that is giving me 14.04 degrees. Okay. Now, tan is positive. Tan positive कहाँ पे होता है? First quadrant और first quadrant और third quadrant में दूसरे में भी tan positive है. दोनों में आप कौन से angles consider कर रहे होगे? First quadrant में और third quadrant. Okay, so alpha is going to be here or here. तो first equation से आपके पास क्या answers आते हैं? One possibility is x equals 14.04. आप इसको 14.0 भी लिख सकते हो, sir. That's okay. And then the next one is going to be 180 plus 14. And that gives you 194.0. So these are two answers that you're getting from this. 194 and 14. But we also need to think about, we also need to solve the other equation now. That's tan x equals 4 over 9 and see what we get from that. इसमें भी exactly वही same process apply करेंगे. We would first find the basic angle. Tan alpha equals 4 over 9. Let's see what the basic angle turns out to be here. Tan inverse of 4 divided by 9. That is giving me, that's a pretty small number. Oh yeah, so I did tan by mistake. So this is 23.96. So that is actually going to become 24.0. That's the basic angle that I'm getting from the second case. इसमें भी आपके पास वही दो values आएंगी, एक first quadrant के अंदर और एक third quadrant के अंदर. First quadrant वाली value क्या हो जाएगी? 24.0 degrees. Or maybe I'm doing something wrong here. Let me just check. Tan of x, that is positive. That is all right. और यहाँ पे मेरे पास क्या रहा है? It's turning out to be fine. Yeah. Okay. So that's the correct value. 24.0. ये यार है. दूसरे अब देखते हैं. 180 plus 24. What does that give me? 180 plus 24. That gives me 204 degrees. So there are four answers that we're getting: 24, 204, 14, and 194. All right.
ये हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई, ठीक है। These are the solutions that we have. Okay, so that was question number 5. Let's move on to question number 6 now. Now this seems to be quadratics, the first part. The second part is just finding the range of that function, inverse, and finding the composite function. This looks pretty straightforward. Let's do this. हमने सारी questions कर लिए हैं, तो ये भी कर लेते हैं. हमने सारे किए हैं पहले. Yes, we're done with 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, let's actually just complete this paper. The function f is defined by this: f of x equals 2x squared minus 16x plus 30 plus 23 for x less than 3. Now it says express f form. Completed square form है, इसमें आपको convert करना है. How do you do that? There are multiple methods that you might know about. आप कोई भी apply कर लें, whatever you're more comfortable with, that's okay. One possibility is that the most common of those methods that you've learned is this one. आप क्या करें, first two terms में से पहले 2 common ले लें, because हमें x square का coefficient 1 बनाना है. So we have 2 into x square minus 8x. All right. And now what you do is you leave some space and you have 23 outside as it is. Divide 8 by 2, that's going to be 4. You add 4 square here and also subtract 4 square. Okay. And now these first 3 terms are going to give you a perfect square. So that gives you 2 into, यहाँ से x आएगा, minus आएगा और 4 आएगा. So you have 2 into x minus 4 whole squared. This minus 16 remains as it is, but remember it's inside the brackets. ये भी 2 से multiply होना है, जो बाहर वाला 2 है. So we get 2 into x minus 4 whole squared minus 32 plus 23. And that gives me 2 into x minus 4 whole squared minus 32 plus 23. That's going to be minus 9. Okay, so this is your completed square form. ये आपको करना था in the first part, ठीक है? Now, once you're done with this, in the second part, it says find the range of f. Now, range of quadratic functions, how do you figure that out? आपको सोचना पड़ता है graph का. It's a U-shaped graph. Why? Because the coefficient of x squared is positive. So the graph is going to be U-shaped like this. Okay, this is how the graph looks like. अब आपने सीधा ये नहीं कह देना कि टर्निंग पॉइंट के ऊपर वाला सारा रेंज होगा, सारी रेंज होगी. आपको देखना है पहले, डोमेन का भी सोचना है थोड़ा सा पहले, ठीक है? अभी हम देखते हैं. Do we have the turning point? Yes, because ये completed square form से हमें पता चलता है कि turning point क्या है. जो अंदर वाला नंबर होता है उसको flip कर दें. That's 4. minus 4 का साइन चेंज कर दें. 4 बन गया. बाहर वाला साइन वैसे रहता है. 4 and minus 9. The turning point is 4 and minus 9. Now let's think about the domain that we're given. The domain is x less than 3. अब 3x की वैल्यू किधर आ रही होगी? x की वैल्यू 3 कहाँ पर आ रही होगी? इस टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे. यहाँ पे देखें, this is 4 on the horizontal axis. 3 is going to be to the left of this value. So 3 is going to be here, let's say. Now, this is a point at which the x coordinate is 3. Y coordinate अभी हम देखते हैं. The function is only defined for x less than 3. इसका मतलब है 3 से लेफ्ट साइड पे सर फंक्शन नहीं डिफाइंड है. कर्व पे only this part is defined. अब इसकी रेंज क्या होगी? It's not going to be greater than minus 9. It's actually going to be greater than whatever this value of y is. तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 के ऊपर देखना पड़ेगा corresponding value for y क्या आती है इसके अंदर. ठीक है? So what was the function? The function was f of x equals 2x squared minus 16x. आप कोई भी फॉर्म यूज कर लें, it doesn't matter. Minus 16x plus 23. आपको क्या करना पड़ेगा? पहले x की वैल्यू 3 इनपुट करके देखना पड़ेगा ये पॉइंट क्या आता है आपके पास. Okay, let's evaluate that. 2 into 3 squared, that's 2 into 18, minus 16 into 3 plus 23, that is giving me, let me just try that again. 2 into 9, sorry, yeah. So this is giving me minus 7. F of 3 equals minus 7. So इस पे जो y coordinate आ रहा है, this is minus 7. Okay, तो आपकी रेंज फिर क्या हो जाएगी? y axis के ऊपर you have to be greater than
-7। रिमेंबर 3 जो है उसने इंक्लूड नहीं किया हुआ ना, उसने कहा x इज लेस देन 3, यानी 3 वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो हम भी क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट में भी -7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम कहेंगे रेंज इज एनीथिंग अबव -7। सो रेंज हियर इज गोइंग टू बी y greater than -7. You can write it like this, or you can say f of x is greater than -7. दोनों में से आप कोई भी लग सकते हैं, that's acceptable. Okay? तो इसमें आपने -9 से अबव नहीं कर देना, बस टर्निंग पॉइंट का सोच के आपने देखना है डोमेन क्या है, उसके हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट तो डोमेन के अंदर आ ही नहीं रहा, अब क्योंकि वो डोमेन में नहीं आ रहा, इसकी रेंज क्या होगी फिर y greater than -7. Okay? Let's move on. And next part it says find an expression for f inverse of x. Remember, inverse find करने के लिए quadratic functions का you always have to use the completed square form. ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के अलावा आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब आपने स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ है पहले, what's that? That's 2 into x minus 4 whole squared minus 9. Okay, this is what f of x is. Let's find the inverse. Remember, this function is only defined for x less than 3. ये उसने डोमेन दी हुई है वहां पे। Okay, so the domain is x less than 3 that we're given. Now, how do we start? We say let y equals f of x. F of x squared by y like that, and that gives you y equals 2 into x minus 4 whole squared minus 9. Now you need to make x the subject, so you can take 9 to the other side, and that gives you x minus 4 whole squared equals y plus 9, and then divide by 2. That gives you y plus 9 divided by 2. Okay, now take square root on both sides, but remember, whenever you take square root, you have to put plus minus. So you have x minus 4 equals plus minus square root of y plus 9 divided by 2. And now take 4 to the other side, that gives you x equals 4 plus minus square root of y plus 9 divided by 2. All right? अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इस प्लस और माइनस में से कौन सा आपको कंसिडर करना है। How do you do that? You can look at this domain before you interchange the variables. अभी आपने variables interchange नहीं किया, अगर इससे आप पहले देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ था, x is less than 3, right? तो आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू लेस देन 3 है। अब राइट साइड पे जो x की वैल्यू आ रही है, ये लेस देन 3 कैसे आ सकती है? 4 में कोई चीज ऐड करने से आएगी या सबट्रैक्ट करने से आएगी? 4 में से कुछ माइनस करेंगे तो 3 से छोटी वैल्यू आ सकती है ना, प्लस करने से तो 4 से बड़ी वैल्यू आएगी, वो 3 से भी बड़ी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, rather than using plus we'll have to use minus here. तो फिर आपका इनवर्स क्या हो जाएगा, f inverse of x. Now you can interchange the variables and make sure that you use the minus sign in this case. 4 minus square root of x plus 9 divided by 2, and that is the inverse function that you have here. All right, so ये साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस पहले लगाना, फिर आपने देखना है कि प्लस और माइनस में से कौन सा वाला वैलिड होएगा। यहाँ पे माइनस आपको यूज करना था, so that's your final result. Okay, let's move on. First part D of this, it says function g is defined by g of x equals 2x plus 4 and x is less than -1. It says find and simplify an expression for f g of x. Okay, इसमें कॉम्पोजिट फंक्शंस में डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं कभी कभी, बट यहाँ पे तो सिंपली आपको एक्सप्रेशन निकालना है, दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। f of x equals 2 into x minus 4 whole squared minus 9. आप ये वाली फॉर्म यूज कर सकते हैं if you want, या दूसरी फॉर्म यूज कर लें पहले वाली, ये भी कर सकते हैं, that's your choice, you can use any of them. So let's say we have this 2 into x minus 4 whole squared minus 9. This is f of x, and g of x is 2x plus 4. Okay, आपको evaluate क्या करना है, f g of x, so you can say f of g of x. So f के अंदर आपने g input करना है, g क्या है, g is 2x plus 4, so it becomes f of 2x plus 4. In the function f, wherever you have x, उसको आपने रिप्लेस कर देना है 2x plus 4 से. Okay, let's do 2 into, देखें x की जगह पे क्या किया हमने, 2x plus 4 डाल दिया, you have -4, this -4 that remains as it is, whole squared minus 9. ठीक है,
Plus 4 minus 4 get cancelled. We have 2 into 2x whole squared minus 9. Let's simplify this, and that gives us 2 into 4x squared minus 9, and that becomes 8x squared minus 9. This is fg of x. ये expression हमें यहाँ पे figure out करना था. This is the composite function fg of x. All right, that was part D of this question. Let's move on to the next one. Question number 7. It says the diagram shows the circle with equation x minus 2 whole squared plus y plus 4 whole squared equals 20 and with center C. The point B has coordinates 0, 2 and the line segment BC intersects the circle at P. Okay, so there's this line BC that is intersecting the circle at this point P. Okay, equation दी हुई है और उसने सेंटर बताया हुआ है और ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हमें भी ग्राफ पे नजर आ रहे हैं. So everything is visible on that graph. We first need to find the equation of the line BC. Okay, so line BC की equation निकालनी है. That's a straight line. Straight line के लिए हमें क्या चाहिए होता है? We need the gradient and any one point on the line. All right. Do we have a point? Yes, we know the point B already. That's actually the y-intercept. But we do not have the gradient. Gradient कैसे figure out करें वो हमने देखना है. We have the equation of the circle C. We have the equation of the circle. उसका center जो है वो C है. Center के coordinates हम निकाल सकते हैं. इसको standard form से compare कर लें. X minus a whole squared plus y minus b whole squared equals r squared. That's the standard form of the equation of the circle. A and B are the coordinates of the center. Right? अब क्या करेंगे बस अंदर वाले numbers के sign change कर देंगे. So it becomes 2 and minus 4. These are the coordinates of the point C. तो आप यहाँ पे लिख दें. C के coordinates क्या है? 2 and minus 4. You can find the gradient of BC now, because the coordinates of B are 0 and 2, right? y2 minus y1, so that's 2 minus 4, that's 2 plus 4 divided by 0 minus 2. What do we get from this? Minus 3, that's the gradient of BC. Gradient आ गया, अब equation आप लिख दें. You can use y equals mx plus c here as well, because you have the y-intercept, so इससे directly हो जाएगा. आपके पास equation क्या आ जाएगी? Y equals minus 3x plus the y-intercept, that's 2. So minus 3x plus 2, that's the equation of the line BC that we were looking for. All right. Okay, let's move on. That was part A. Part B says, hence find the coordinates of P, giving our answer in exact form. Okay, coordinates of P. This is the point P. Its coordinates figure out करना. Now, how would you describe the point P? P is actually the point of intersection of the circle and the line BC. तो दोनों की equations आपके पास हैं. आपके पास circle की भी equation है, line की भी equation है. You can just solve them simultaneously, and that is going to give you the coordinates of the point P. All right, so let me write down those two equations here. We have the equation of the circle that looks like this: x minus 2 whole squared plus y plus 4 whole squared equals 20. That's the equation of the circle that we've got. An equation of the line that we have found is y equals minus 3x plus 2. You just have to solve them simultaneously. इनको simultaneously हम कैसे solve करते हैं? जो linear वाली equation होती है ना, उसको हम input कर देते हैं दूसरी equation में. इसको जाके यहाँ पे input कर दें. Okay. Now let's see what that gives us. Y की जगह पे ये डाल दें minus 3x plus 2. We get x minus 2 whole squared plus y की जगह पे you have minus 3x plus 2 plus 4 whole squared equals 20. Now let's simplify this. We get x minus 2 whole squared plus minus 3x plus 6 whole squared equals 20. Now be careful with the expansion here. X minus 2 whole squared, that's as a minus b whole squared. That's going to be x squared minus 2x plus 4. Minus 4x in fact. So x squared minus 4x plus 4. And what about this now?
If you are treating this as a plus b, remember a की value आप क्या लेंगे, पूरा का पूरा ये -3x ये पूरा लेंगे, that's a. So -3x का whole squared सबसे पहले, okay, plus 2 into a which is -3x into b which is 6. तो ये second term जो है negative हो जाएगी, keep that in mind. And then 6 का square, that is going to be 36. ठीक है, let's see what we get from this. X square minus 4x plus 4 plus 9x squared minus 36x plus 36 minus 20 equals 0. And this is giving us 10x squared minus 40x. Yeah, minus 40x. And then we have 4 plus 36, that's 40. 40 minus 20 is 20. We have plus 20 equals 0. We could simplify this and that will give us x squared minus 4x plus 2 equals 0. Now, can we factorize this? Let's think about this. We cannot. Midterm break nahi kar sakte. Yeah, so we can't do that. So what we do is we use quadratic formula. अब उसने क्या, give your answer in exact form. जब भी उसने exact answer मांगा होता है ना, examiner expects you to show complete working. Okay, calculator से directly answer नहीं लग सकते हैं. ठीक है, even if you get the exact answer from your calculator, that's not acceptable. You have to show working. Working कैसे show करेंगे? Quadratic formula में values input कर दें. X equals minus b, so that's minus into -4 plus minus square root of -4 whole squared minus 4 into 1 into 2 whole divided by 2 into 1. Now, examiner expects you to show this working. Okay, so you have to simplify this yourself. 4 plus minus square root of 16 minus 8, that is 8 divided by 2. Now, square root of 8, what's that? Square root of 8 can be simplified to, या बेशक कैलकुलेटर में कर लें, इतना ये चीज कर सकते हैं कैलकुलेटर में. if you want इसको स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना, आप डायरेक्टली कैसे सोचेंगे, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into 2 into 2. इसको आप स्क्वायर बना सकते हो, you can write 2 square into 2. इसका स्क्वायर रूट पर क्या आएगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, you're going to be left with 2 square root of 2. Otherwise, just put this on your calculator. Square root of 8 वो आपको दे देगा 2 into square root of 2, and just write that here, and that gives you 4 plus minus 2 square root of 2 divided by 2. Simplify this, denominator खत्म हो जाएगा, and you have 2 plus minus square root of 2. ये आपके पास दो x की values आ गई. So you have x equals 2 plus square root of 2, or you have x equals 2 minus square root of 2. Remember, you're not looking for only the x coordinates, you also have to find the y coordinates. उसने कहा है find the coordinates of p. That means you also have to find the y coordinates. Y coordinate कैसे आएगा, इसके अंदर input कर देना linear equation के अंदर. Do not input those values in the quadratic equation, although that would be correct, but it's going to make things very complicated because वहाँ पे फिर से square आ रहे हैं, वो बहुत complicated हो जाएगा. Linear में डाल देते हैं, ठीक है, that simplifies things. Y equals minus 3x plus 2. Let's put it here, put it there. Y equals minus 3 into 2 plus square root of 2 minus 6 plus 2. ये आपके पास y की एक वैल्यू आएगी, इसी तरह वो दूसरे में इनपुट कर दें. Y equals minus 3 into 2 minus square root of 2 plus 2. Let's simplify both of them. You get minus 6 minus 3 under root 2 plus 2, and that gives you y equals minus 4 minus 3 under root 2. Right? This is one answer that I'm getting. Do the same thing with the other one. उससे देखते हैं हमारे पास क्या आता है. यहाँ से हमें मिलता है y equals minus 6 plus 3 into square root of 2 plus 2, right? And that gives us y equals minus 4 plus 3 square root of 2. So we're getting two pairs of values of x and y. So now we need to make sure both of them are valid. If they're not, we'll have to ignore maybe one of them. Let's go back. उसने कहा p के coordinates find करने हैं. अच्छा, अगर तो multiple r सकते होते ना आपसे, वो यहाँ पे hint दे देता आपको कि find the possible coordinates or the two possible sets of values for the coordinates of p. यहाँ पे उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा सिर्फ find the coordinates. That means
only one of them can be true. एक तो आपके पास ये सेट आ रहा है, एक दूसरा सेट आ रहा है, इनमें से सिर्फ एक ही सही हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा सही है? ये हम जाके ग्राफ पे देखते हैं। Maybe we get a hint from that. P point is right here. अब इसका देखें, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और इसका y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। Both x and y are positive. Okay, that's one thing. और x कोऑर्डिनेट अब देखें, ये 2 है अगर c का कोऑर्डिनेट, तो ये 0.2 होना चाहिए यहाँ पे। तो x कोऑर्डिनेट 2 से छोटा है, y कोऑर्डिनेट भी 2 से छोटा है, x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों 2 से छोटे हैं। सो p के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं और 2 से छोटे हैं दोनों। That's what we understand from the graph. Okay, now let's go here to the results that we're getting. Now it's pretty obvious here, पहला वाला x कोऑर्डिनेट तो 2 से बड़ा आ रहा है, that's not possible. हम इसको इसी पॉइंट पे भी इग्नोर कर सकते थे और हमें ये भी पता चल रहा है, यहाँ पे देखें एंड पे y की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है इससे, which is not possible, right? So ये वाला जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, this is not p, ये वाला पॉइंट p नहीं है, तो इसको आप नहीं कंसिडर करेंगे। दूसरा पॉइंट p है, तो उसका आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे उसके, 2 minus square root of 2 and minus 4 plus 3 square root of 2. These are the coordinates of the point P that we were looking for. Okay, I hope that makes sense. That was what we wanted to find here. Let's move on to the next one now. All right, question number 8. The diagram shows the curve with equation y equals x raised to power 1 over 2 plus 4x raised to power minus 1 over 2. The line y equals 5 intersects the curve at the points A and B. आपको नजर आ रहे हैं ग्राफ पे। Find the equation of the tangent to the curve at the point A. Tangent की equation कैसे find करते हैं? Tangent is a straight line. You need two things for that: a point on the line and the gradient of the line. दो चीजें चाहिए। Do we have a point on the line? Point A पे tangent चाहिए, तो point तो है आपके पास A से पास करना चाहिए of course, पर tangent तो point है। What about the gradient? Gradient कैसे आएगा? Gradient of the tangent is going to be equal to the gradient of the curve at that point. So we have the equation of the curve, that is y equals x raised to the power 1 over 2 plus 4x raised to the power minus 1 over 2. This is the equation of the curve that we have. All you have to do is find the derivative of this, और उससे देखते हैं हमारे पास gradient क्या आता है. Let's differentiate it first of all. dy over dx. It's going to be half x into minus raised to power x raised to power minus 1 over 2. 1 over 2 multiply हो गया, power में से 1 minus कर दिया, right? And then similarly here, 4 remains as it is. Minus 1 over 2 से multiply किया, x की power में से 1 minus कर दिया, minus 1 over 2 minus 1, that gives us minus 3 over 2. Okay? Now, let's simplify this and see what that gives us. 1 over 2 into x raised to power minus 1 over 2 minus 2 into x raised to power minus 3 over 2. Now, since we're looking for the value of the gradient at this point A, we can input x equal to 1, right? That's the value of x that we have here. Let's do that. Let's put x equal to 1 here. And that gives us dy over dx equal to 1 over 2 into 1 raised to power minus 1 over 2 minus 2 into 1 raised to power minus 3 over 2. And that's 1 over 2 minus 2, which is minus 3 over 2. This is the gradient at the point A. तो tangent का भी एक gradient होएगा, जो curve का gradient है वही आपका tangent का gradient है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, y minus y1 equals m into x minus x1. We have the gradient, we have a point as well. The point A is 1 and 5. All we have to do is input values here. Y minus y1, so that's y minus 5 equals m, which is minus 3 over 2 into x minus 1. That is the equation of the tangent that we have here. Okay, अब उसने कोई specific form मांगी हमसे. Let's have a look at that. Find the equation of the tangent of the curve. No, उसने कोई specific form नहीं मांगी. You can just leave it like this as well, and that's acceptable. इसको as it is छोड़ दें, इसको simplify करने की जरूरत नहीं है आपको. This is fine. Okay. अगर उसने क्वेश्चन में कहा होता है कोई स्पेसिफिक फॉर्म, फिर आपको उसमें कन्वर्ट करना होता, बट यहाँ पे उसने नहीं कहा हुआ, ठीक है?
Okay, let's move on. In the second part, it says calculate the area of the shaded region. Okay, let's look at the graph there. Area of the shaded region. Now, this is area between two graphs. ये हम कैसे फाइंड करते हैं? एक कर्व है इनमें से, तो कर्व का के साथ जो एरिया जो भी होता है वो तो हम इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं, right? Now there are two ways of thinking about this. You know what the equation of the line is. Line की equation is y equals 5. उसके नीचे वाले एरिया निकाल लें, वो रेक्टेंगल है, या बेसिक इंटीग्रेशन से करना चाहें तो y equals 5 को इंटीग्रेट कर लें, that is okay. या फिर रेक्टेंगल के एरिया निकाल लें, वैसे both are fine. X coordinates क्या है यहाँ पे? 1 and 16. तो you know the limits, right? तो आप रेक्टेंगल के एरिया निकाल लें. रेक्टेंगल के एरिया में से अगर आप माइनस कर दें एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, तो वो आपको ये शेडेड रीजन मिल जाएगा. Okay, so that's pretty straightforward actually. Let's do this. Let's find the area of the rectangle first of all. यहाँ पे लिख लेते हैं. Area of rectangle, that's length into width, right? Length into height. Length is 1 to 16, which is 15. 15 into height, which is 5. Area of the rectangle is going to be 15 times 5, which is 75. Okay, so that's pretty straightforward. Now we need to find the area between the graph and the x-axis. Now, what's the function? The function is y equals x raised to power 1 over 2. You can just write that here. The function is y equals x raised to power 1 over 2 plus 4x raised to power minus 1 over 2. That's what the function is. हमें इस कर्व और x एक्सिस के दरमियान में एरिया निकालना है. उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ax equals integral of y with respect to x, limits from x equals a to x equals b. You have to remember this formula. Y क्या है? x raised to power 1 over 2 plus 4x raised to power minus 1 over 2. इसको आपने इंटीग्रेट करना है with limits from 1 to 16. Let's see what we get from this. Let's integrate this first of all. X power 1 over 2 की integration क्या होगी? You add 1 to the power, 1 over 2 plus 1, that is going to give you 3 over 2 divided by 3 over 2 plus 4 as it is into x raised to power minus 1 over 2 plus 1, that's 1 over 2 divided by 1 over 2. Limits are from 1 to 16. ठीक है? Now let's simplify this first of all before you input limits. 2x raised to power 3 over 2, जो denominator में 2 है, ये ऊपर चला जाएगा. Right, so it becomes 2x raised to power 3 over 2 divided by 3. Plus this 2 goes to the numerator as well, and that gives you 8x raised to power 1 over 2. Now you can input the limits from 1 to 16. एक दफा 16 input करें, उससे देखें क्या आता है. एक दफा 1 input करें, so we have 2 into 16 into raised to power 3 over 2 divided by 3 plus 8 into 16 raised to power 1 over 2. ये working दिखाना जरूरी है, आपने values input करनी है, ये examiner को दिखाना है, otherwise आपके marks कट जाएंगे. Subtract from this the case when you input 1, that gives you 2 into 1 raised to power 3 over 2 divided by 3 plus 8 into 1 raised to power 1 over 2. Now let's simplify this. First bracket से देखते हैं आपके पास क्या आता है. 2 into 16 raised to power 1.5 divided by 3 plus 8 into 4. Okay, the first bracket is giving me 224 over 3. Okay, let me just confirm this. 2 into 16 raised to power 1.5 divided by 3 plus 8 into 4. Okay, that looks okay. The second bracket, let's see what that gives us. 2 divided by 3 plus 8. And that is 26 over 3. What does this give us? This gives us 224 minus 26 divided by 3. That's 66. So area between the curve and the x-axis turns out to be 66. Rectangle का area, ये पूरे rectangle का कितना था? 75. उसमें से curve और x-axis दरम्यान वाला minus कर दें तो ये shaded region आ जाएगा. So now we say the shaded area is equal to 75 minus 66, and that gives us 9 unit square.
That's the shaded area that we were looking for. ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, तो दैट्स आल्सो फाइन. इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं? You have this equation y equals 5, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं with limits 1 to 16. That will give you the same thing as well. 5x आपके पास इंटीग्रल आ जाता है, इसमें लिमिट्स डालते 1 से लेकर 16 तक, इससे भी 75 ही मिलता है. ठीक है, तो दैट्स योर चॉइस. रेक्टेंगल से कर लें या इंटीग्रेशन से कर लें. दूसरे का एरिया 66 आ रहा है, दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया. द शेडेड एरिया टर्न्स आउट टू बी 9 यूनिट स्क्वायर. All right, let's move on. Let's move on to the next one now. Question number 9. Now it says the diagram shows triangle ABC with AB equal to BC equal to 6 centimeters. So we have an isosceles triangle here, and the angle ABC is 1.8 radians. अब देखें angle radian में है, तो calculator mode आपने सही रखना है. ठीक है. The arc CD is part of a circle with center A and ABD is a straight line. Okay. So ये A center है और उससे आपकी ये arc बनी हुई है इस तरह. So that means this whole thing, this whole figure is a sector. Okay. And the first part it says find the perimeter of the shaded region. Perimeter क्या होता है? Length of the boundary. Right. Boundary की length हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आती है. You have 3 sides here. One is 6 centimeters. This is already known. The other is BD. ये हमें नहीं पता. ये हम figure out कर सकते हैं. And then you have this arc length CD. ये भी हमें figure out करनी पड़ेगी. ठीक है? So how do we go about doing this? एक length पता है 6 centimeters. उसको use करके बाकी figure out करनी है. So we can start like this. We can actually break it down. So you can either use cosine rule. That's one possibility. Cosine rule use करके आपके पास included angle है, 2 sides हैं. Cosine rule use करके आप ये third side find कर सकते हो. Right? You will do something like this. AC square equals 6 squared plus 6 squared minus 2 into 6 into 6 into cos of 1.8. Right? और उससे आपके पास AC की value आ सकती है. That's one way of doing this. Another possibility would be that you break this isosceles triangle down like this. Remember, isosceles triangle में अगर इस तरह से दरम्यान से break कर ले, तो ये 90 degrees का angle बनता है. And it divides this third length into 2 equal parts. So अगर हम इस point को x कह लें, AX और XC जो है एक दूसरे के equal होने चाहिए. अब इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं. दैट विल सिंपलीफाई कैलकुलेशन. दिस एंगल इज आल्सो बाइसेक्टेड. 1.8 रेडियन टोटल एंगल था, तो ये इतना एंगल कितना हो जाएगा? ये 1.9 रेडियंस, सॉरी 0.9 रेडियंस हो जाएगा. ओके, दिस इज 0.9 रेडियंस. नाउ लेट्स यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड AX. अब एक साइड हमारे पास 6 है, दैट्स हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल. AX is perpendicular or opposite side find करनी है. ठीक है, opposite और hypotenuse में कौन सी रेशियो होती है? Sin AX over hypotenuse, that's 6, is equal to sine of 0.9. यहाँ से क्या होगा? हमारे पास AX की वैल्यू आ जाएगी. Make sure your calculator is in radian mode. So let me change that mode here. Yeah, so 6 sine of 0.9. And that is giving me 4.6999. So that's 4.7. AX की length 4.7 आ गई. What about AC? AC कितना हो जाएगा? 2 into this. That gives us 9.4. The length of AC is 9.4. अब ये 9.4 क्या है? ये आपका रेडियस भी आ गया उस सेक्टर का, राइट? ये आपका रेडियस आ गया इसका. अच्छा, अब रेडियस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? हम ये लेंथ BD में निकाल सकते हैं. BD लेंथ कैसे आ जाएगी? ये सेक्टर है क्योंकि, तो हमें AD पता है क्या है, राइट? ये AD के भी तो इक्वल होएगा ना. दिस इज ऑल्सो AD, राइट? क्योंकि वो भी रेडियस है सेक्टर का. तो BD लेंथ निकाल सकते हैं इससे. लेंथ BD वो कैसे आएगी? टोटल लेंथ 9.4
subtract from this, subtract from that this length 6, and that gives you 3.4. The length BD turns out to be 3.4. ये हमने figure out कर ली, ठीक है? ये दूसरी साइड आ गई हमारे पास उस shaded region की. Now we need this arc length. Arc length के लिए क्या फॉर्मूला होता है? S equals R theta. Radius तो आ गया हमारे पास 9.4. Angle नहीं है. Angle कैसे निकाल सकते हैं? This angle. Again, you can use this right angle triangle that we have here. We know this angle is pi over 2. This angle is 0.9. Pi में से minus कर दें दोनों angles. You'll get the angle BAX from that, BAC angle. तो ये angle निकाल लेते हैं. Angle BAC, that's going to be pi minus, remember triangle का sum of all angles क्या होता है? Pi radians. उसमें से minus कर दें pi over 2, 90 degrees का equivalent, right? Subtract this from that. So pi minus pi over 2. Also subtract from that 0.9. And let's see what that gives us. Okay, so this is giving me 0.6708. ठीक है, ये angle BAC आ गया. So what about the arc CD now? Arc CD. Remember S equals R theta. So ये R theta आएगा. Radius क्या है? 9.4. Angle क्या आ गया हमारे पास? 0.6708. Let's just multiply these two. And this is giving me 6.305. So that's 6.305 units. That's the arc length CD. Okay, so we have all of these lengths now. इन सबको add कर लें. एक आपके पास 3.4 आ रहा है. This is one length. ये 6.305 आ रहा है. और एक 6 आपको length पहले से पता है. एक side BC. इन सबको add कर लें and see what that gives you. Perimeter is 6 plus 3.4 plus 6.305. Let's evaluate this. This is giving me 15.7. So that's the perimeter that we have here. The perimeter of the shaded region is 15.7. Okay. That was pretty straightforward for 5 marks. Not that complicated. Let's look at the next part now. In the next part, it says find the area of the shaded region. Okay, so how do we think about this now? Area of the shaded region. Sector का area निकाल लें. Radius भी है, angle भी है, right? और उसमें से minus कर दें triangle का area. That's pretty straightforward actually. So area of shaded region is just area of sector. पूरा जो sector है, पूरी figure उसमें से minus कर दें area of the triangle. ABC. उस पूरी ट्राइंगल का इकट्ठे निकालना चाहते हैं, इकट्ठे निकाल लें, या राइट एंगल ट्राइंगल हमने 2 बनाई है, उनका अलग अलग निकाल लें. दैट्स योर चॉइस. ओके, मैं पूरी का निकाल लेता हूँ बिकॉज हमें दरमियान वाला एंगल पता है. एक साइड ये है, एक साइड ये है. AB साइन से यूज कर लेंगे. ठीक है. सो व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ द सेक्टर? लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूलाज हियर इफ यू do not remember. Half r square theta, that's the area of the sector. Area of triangle हम कौन से यूज कर रहे हैं यहाँ पे? Half AB sine of C. Okay, इसमें values input कर रहे हैं हम सिर्फ. Radius is 9.4. Angle is 0.6708. हमने पहले find किया. Sector का angle. Subtract from this the area of the triangle. That's half into AB sine C. देखें दो sides आपके पास हैं 6 and 6. उनके दरमियान वाला angle क्या है? 1.8. So we say it's half into 6 into 6 into sine of 1.8. Let's evaluate this. First हमारे पास क्या आता है? 9.4 squared divided by 2 into 0.6702. Area of sector is turning out to be 29.61. Subtract from this 18 into sine of 1.8, and that is 17.53. 29.61 minus the answer, that is giving me 12.08. So the area of the shaded region therefore turns out to be 12.08. If you want to round it off, you can say this is 12.1. You can also leave it like this. 12.08 is also fine because यहाँ पे question के अंदर उसने कोई restriction नहीं दी है. आप 3 significant figures से ज़्यादा लिख सकते हैं. That's okay. कम नहीं लिख सकते, ज़्यादा लिख सकते हैं.
All right, so that's the result that we're getting from this part B of question number 9. Let's move on to the next one. Before we move on to the next one, just a reminder to like this video and share with others if you think this might help others as well. Liking the video actually helps more people find it later on. Otherwise, if people see कि ज़्यादा views हैं और वो कम likes हैं, तो it basically does not spread that much. So that will be really helpful for spreading this video to more people. And you can also have a look at the description below for more content. I've uploaded complete syllabus for paper 1, paper 3, M1 and S1, and also you'll find quick revision videos and yearly past papers. They should also be very helpful. All right, let's start this. Question number 10. The function f is defined by f of x equals 4x plus 2 whole raised to the power minus 2 for x greater than minus 1 over 2. All right, so we have this function now. It says find the integral of f of x with limits 1 to infinity. Okay, so how do we do this? Let's write this down. We need to evaluate this integral 4x to whole raised to the power minus 2. Limits are from 1 to infinity. पहले तो इंटीग्रेट करें इसको. इंटीग्रेट हम इसको कर सकते हैं क्या पावर रूल लगा के? Yes, because the base of this power is linear, तो इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, right? पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इस पावर रूल अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है. 4x plus 2 whole raised to the power minus 2 plus 1, add 1 to the power, it becomes minus 1 divided by this new power minus 1 and also divide by the derivative of the space 4x plus 2 का derivative क्या होगा? 4 होगा. ठीक है, ये आपकी इंटीग्रेशन होगी. अब इसमें लिमिट्स डालनी है आपने 1 से लेकर infinity तक. Let's simplify this first of all before you do any of that. So you have minus 4 in the denominator, minus सब साइड पे लिख लें, and then you can say minus 1 over, ये भी negative power है, इसको मैं denominator में लेकर जा रहा हूँ, becomes minus 1 over 4 into 4x plus 2. Okay, this is what it turns out to be. Limits are from 1 to infinity. ठीक है, अब इसमें देखते हैं लिमिट्स इनपुट करते हैं तो क्या होगा. अब जब इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी तो आपने सोचना है कि क्या होगा अगर हम x की जगह पे बहुत ही बड़ा नंबर डाल दें. ओके, अब इस लेवल के ऊपर इट्स आल्सो फाइन इफ यू वांट टू जस्ट इनपुट दैट देयर. मतलब वर्किंग में शो भी कर दें, दैट डज नॉट मेक मच डिफरेंस, दैट्स ओके. 4 into infinity plus 2, subtract from this minus 1 over 4 into 4 into 1 plus 2. All right, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे evaluate करेंगे. You can either think of it logically. आप देखें minus 1 over this expression. अभी देखिए 4 into 4 times infinity plus 2, जब infinity आ गया इसका मतलब है ये बहुत ही बड़ा नंबर है. So 1 over an extremely large number, 1 divided by an extremely large number, that is just going to be something very close to 0, and it's going to actually approach 0. Okay, so denominator में बहुत बड़ा नंबर आ गया है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी. It's going to go towards 0. If you find that hard to figure out, आप क्या करें कैलकुलेटर में ना infinity की जगह पे बहुत बड़ा नंबर डाल देंगे, right? So 1 billion डाल दे, 1 trillion डाल दे. Put a very very large number on your calculator. Infinity की जगह पे बहुत बड़ा नंबर डाल दे. आपको कैलकुलेटर देखे आपको दे देगा 0.0000 something या 1 into 10 raised to power minus something, या फिर आपको अगर आपने बहुत बड़ा नंबर ले लिया आपको कैलकुलेटर 0 ही आंसर देगा. ठीक है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. And then you can evaluate the second fraction. Minus into minus, that becomes plus. In the denominator there we have 4 into 6, and that's 24. So the result here turns out to be 1 over 24.
Okay, and that's your final answer, 1/24. That is what we were looking for here. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन. तो इन्फिनिटी आ जाएगा तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में अगर डालना है तो बहुत बड़ा नंबर डाल दें, दैट विल गिव यू एन आइडिया. In the second part, it says a point is moving along the curve y equals f of x in such a way that as it passes through the point A, its y coordinate is decreasing at the rate of k units per second, and its x coordinate is increasing at the rate of k units per second. We need to find the coordinates of the point A. Okay, so this is ongoing on here. I would just take a 1-minute break. Let me resume with this. Mr. Let me answer your question in a moment. Just have a 1-minute break and then we resume. We'll try to finish it early. Maghrib का time बहुत कम आएगा, निकल जाएगा. So we have one more question to go. Yeah. All right, let's resume. Walaikum assalam, Mustafa. Good to see you here. I'm good, alhamdulillah. Infinite wala hamesha 0 hoega. In most cases, yes. Exception would be if you have something like this. For example, like a function आपका इस तरह से 1/4x plus 2 अगर इस तरह से होता तो ये वाला part 0 हो जाएगा, right? जहाँ पे जिस fraction के नीचे infinity आ जाए वो वाली fraction 0 हो जाएगी, लेकिन अगर plus 2 side पर पड़ा हुआ है तो वो तो वैसे ही रहेगा, right? तो plus 2 तो रहेगा वहाँ पे. But yes, जो जिस fraction के नीचे denominator में 0 आ जाएगा, denominator में infinity आ जाएगा तो वो fraction तो 0 हो जाएगी. Yes. ठीक है, अच्छा. पेपर 3 में एक कुछ तो जनरल है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नेवर गेट स्टक एट एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपको एक फ्लो में चलना है. अगर आप किसी क्वेश्चन पे आप 2-3 मिनट आपने स्पेंड कर लिए हैं एंड यू नॉट एबल टू फिगर इट आउट, यू शुड मूव ऑन एंड कम बैक टू दैट क्वेश्चन एट द एंड. बिल्कुल एंड पे वापस आए उसके ऊपर. सो दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर ऑल पेपर्स. अब M1 पेपर्स भी काफी लंबे आने लगे हैं रिसेंट, तो आपको उसमें भी ज्यादा ध्यान रखना होता है. पेपर 1 और S1 में इतना मसला नहीं होता नॉर्मली, बट पेपर 3 और M1 दोनों में मसला होता है. ठीक है, M1 में रीसेंट पेपर्स में कुछ मसला होता है. तो
आपको ये इंश्योर करना है, if you get stuck at any question and you're not able to figure it out, don't just make it an issue of your ego कि मैंने करके छोड़ना है. Move on, come back to that later. Most likely जो कुछ और questions होंगे जो आसान होंगे वो आप पहले कर लें, अदरवाइज अगर उस पर स्टक हो गए तो बाकी आपके आसान वाले क्वेश्चन रह जाएंगे. ठीक है. पेपर 3 में स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़ा सा एंड के लिए छोड़ जाने चाहिए. फॉर एग्जांपल ग्राफ्स वाले क्वेश्चन कभी पेपर के दरमियान में ना करें, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम. प्रूफ वाले क्वेश्चन में अगर आप स्टक हो जाएं कहीं पे, वैसे तो आप करते रहें उसको फ्लो में, अगर आप कहीं पर स्टक हो जाएं तो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट, बिकॉज उसके बाकी पार्ट्स तो आप फिर भी कर सकते हैं. तो बाकी पार्ट्स आप फिर भी करें और उस पर वापस आएं. एंड देन अगेन आप उसी तरह से देखेंगे जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं उनको आप एंड के लिए छोड़ दें, बाकी पेपर आप कर लें. सब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेहतर होएगा. आप जब आपने एक मेजर पार्ट ऑफ द पेपर आपने कंप्लीट कर लिया होएगा, फिर आप जो आपको जो टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं और इस पेपर में भी उसके मुश्किल क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो फिर आप उनको एंड के लिए छोड़ दें. बट दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है. कुछ लोगों को इंटीग्रेशन आसान लगती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मुश्किल लगते हैं, कुछ लोगों को कोई और टॉपिक मुश्किल लगता है. तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि अच्छा आपको कौन से टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं. अगर उनका आपको लगता है बहुत बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो देखिए आपको परेशान करे, उसको छोड़ दें, एंड के लिए छोड़ दें, एंड पे वापस आए इसके ऊपर. दरमियान में इस तरह क्वेश्चन लेके ना बैठे. बट व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ पेपर्स, आपको ये खुद से अपनी ना एक आपकी हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि अच्छा आपके लिए आपको क्या सूट कर रहा है. तो वो आता है जब आप टाइम प्रैक्टिस करेंगे, खुद से बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उससे आपको वो एक आइडिया होना शुरू होएगा कि आपके लिए कौन सी चीज जो है वो वर्क कर रही है. All right, let's move on then. Let's move on to the second part of this question then. First part is yeah, we had this function और हमने इसको इंटीग्रेट करके ये कर दिया. ठीक है. अब सेकंड पार्ट में कहता है point is moving along the curve y equals f of x. Now what was that curve? Let me just write that here. F of x was equal to 2x, no, 4x plus 2. 4x plus 2 whole raised to power minus 2. And the domain of this function is x greater than minus 1 over 2. The domain is x greater than minus 1 over 2. ठीक है, ये आपके फंक्शन की डोमेन है. ठीक है. अब उसने कहा है a point is moving along this curve y equals f of x so in such a way that as it passes through the point A इसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने, राइट. तो पॉइंट ए के पास क्या होता है, इट्स y कोऑर्डिनेट. so at A the y coordinate is decreasing at the rate of k units per second. Rate of decrease of y coordinate, rate of change of y coordinate, तो क्या होगा dy over dt. What is that equal to? उसने कहा it's decreasing at the rate of k. इसका मतलब है ये क्या होगा माइनस के. डिक्रीज होता है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं वहां पे, राइट. सो dy over dt is minus k. And the x coordinate is increasing at the rate of k units per second. So that means dx over dt, what is that going to be? That is going to be plus k. So that's just k. ये उसने बताया हुआ है कि a के ऊपर ये दो चीजें ट्रू है. ठीक है. अब हम क्या करें, रेट ऑफ चेंज है तो रिमेंबर इसमें हम चेन रूल यूज करते होते हैं. So we have dy over dt, that's minus k. We have dx over dt, that is k. What about dy over dx? We can make a chain using this. ये हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, dy over dx dy over dx, what is this going to be equal to? दो फ्रैक्शंस होंगी. फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर dy होगा, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर dx होगा, दरमियान में आपका थर्ड वेरिएबल आ जाएगा. So you have dy over dt into dt over dx. What is dy over dt? It's minus k. dt over dx, that is reciprocal of this, that's 1 over k. What do you end up with? dy over dx is equal to minus 1 from this. ये आपके पास dy over dx आ गया. आपको करना क्या है, एक कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x और y की वैल्यूज निकाल. अब एक इक्वेशन तो आपके पास ये फंक्शन है ओरिजिनली, राइट. वो क्या इक्वेशन है, y equals 4x plus 2 whole raised to power minus 2. ये एक आपके पास
y और x में रिलेशनशिप है। एक और रिलेशनशिप आप निकाल सकते हैं dy/dx की वैल्यू -1 के इक्वेट करके। वो कैसे आएगी? इस फंक्शन को पहले तो डिफरेंशिएट कर लें एंड फाइंड dy/dx फ्रॉम दिस। What do you get from that? -2 into 4x plus 2 whole raised to power -3, and you also have to multiply by the derivative of the base. 4x plus 2 का derivative क्या हो जाएगा? 4. You multiply by that, and that gives you -8 over 4x plus 2 whole raised to power 3. This is dy/dx. अब क्योंकि dy/dx की वैल्यू -1 होनी चाहिए, हम क्या करते हैं? इसको इक्वेट कर देते हैं इसे -8 over 4x plus 2 whole cube. This should equal -1. Now we solve this equation. We take this to the other side. -1 को यहाँ पे ले आए, and that is going to give us -8 over -1. That equals 4x plus 2 whole cube. On the left side, we have 8. Take cube root on both sides. We get 4x plus 2 equal to cube root of 8, which is just 2. And this gives us 4x plus 2 equal to 2. 2 और 2 cancel हो जाएंगे. 4x equals 0. The value of x that we have here turns out to be 0. ठीक है, x की वैल्यू आ गई. अब इसको वापस इनपुट कर दें फंक्शन के अंदर. ये आपके पास फंक्शन है, इसके अंदर इनपुट कर दें, y की वैल्यू आ जाएगी. Let's do that. So we have y equals 4x plus 2 whole raised to power -2. Input the value of x there. That gives you 4 into 0 plus 2 whole raised to power -2. And this gives us 2 raised to power -2, which is 1 over 4. That's the value of y that we end up getting. So what are the coordinates of this point then? The point A that they're saying here. The point A turns out to be 0 and 1 over 4. That is the point that we were looking for. Okay? So that was the second part of this question, part B. All right. Now let's move on to the last one. But before we do that, I just connect my charger. It's my iPad is just about to die. So it's connected. All right, let's move on to the last one then. Question number 11. Let's do this quickly and then we end. The point P lies on the line with equation y equals mx plus c, where m and c are positive constants. A curve has equation y equals minus m over x. There's a single point P on the curve such that the straight line is a tangent of the curve at P. Find the coordinates of P giving the y coordinate in terms of P, in terms of m. All right, so now this is slightly complicated. The main reason for that is उसने कोई diagram यहाँ पे नहीं दी हुई है. All right, तो आपको खुद से ये एक तरह से visualize करना है to try to understand this better. Okay, now let's think about this. So the point P lies on this line, y equals mx plus c, where m and c are both positive. So keep this in mind. M and c are both positive constants. Yeah, that's okay. A curve has equation y equals minus m over x. Okay, so we have a line and we have a curve. There's a single point P on the curve such that the straight line is a tangent to the curve at P. Find the coordinates of P giving the y coordinate in terms of m. Okay, now देखिए आपकी एक curve है. Maybe it's like this. We don't know what the shape of the curve is, so let's say it is something like this. Okay, लेकिन m वहाँ पे positive है, तो ये इस तरह से होना चाहिए कि gradient tangent आपका upward sloping बने.
So it might be something like this. Let's say इस तरह की curve है आपकी, ठीक है? Just as an assumption, let's say इस तरह की curve है, तो point P कोई है curve पे, point P कोई है curve पे, such that इस पे जो tangent बनता है, इस पे जो tangent बनता है, that is this line. That's the line y equals mx plus c. All right? अब देखें tangent का gradient क्या है m, तो इसका मतलब ये होगा जो कर्व का ग्रेडियंट होगा पॉइंट P के ऊपर, वही आपका tangent का ग्रेडियंट होएगा. Okay? So let's find the gradient of the curve at the point P. Let's find the gradient of the curve at the point P. Now, what is the curve? The curve is y equals minus m over x. You could write this like this. We could say this is minus mx raised to power minus 1. Let's find the derivative of this first of all. Right? Up tangent, up gradient of curve, kaise nikalte hain uske derivative se? Okay. Let's find the derivative. Minus m into minus 1, that's going to be plus m into x raised to power minus 2, and that turns out to be m over x squared. That is dy over dx. Ye derivative aa gaya. Now, what should this derivative equal? क्योंकि tangent का gradient m है, तो जो curve का gradient इस point पे है वो भी m होना चाहिए. So this derivative should be equal to m. So we have m equal to m over x squared. M is a positive number, so m और m to cancel हो गए. What are we left with? We're just left with 1 equals 1 over x squared, right? And that gives us x squared equal to 1, and x turns out to be plus minus 1. ठीक है, अब देख लें प्लस माइनस 1 दोनों पॉसिबल हैं क्या इसके अंदर? इसमें कोई कंडीशन है हमारे पास? नो. अच्छा, इसमें इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कोई कंडीशन एज सच नहीं है कि x की वैल्यू +1 होगी या -1 होगी. ठीक है, सो वी कंसिडर बोथ ऑफ देम, ओके, एट दिस पॉइंट. अब हम देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट. कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? एक आपके पास x की वैल्यू +1 है और एक आपकी x की वैल्यू -1 है. इनको यूज करके आप कर्व के ऊपर आप दूसरा आप देखोगे y कोऑर्डिनेट क्या आता है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. लेट्स इनपुट इट देयर. y equals minus m over x, राइट? इसके अंदर हम इनपुट कर देते हैं. एक दफा हम क्या करते हैं, x की वैल्यू -1 इनपुट कर दें और एक दफा x की वैल्यू 1 इनपुट कर दें एंड सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट. रिमेंबर, इनमें से सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है बिकॉज उसने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज अ सिंगल पॉइंट P, तो मल्टीपल आंसर्स नहीं आ सकते. तो हमें किसी तरह से फिगर आउट करना है कि इनमें से कौन सा ट्रू होएगा, +1 वाला या -1 वाला. तो अभी हम देखते हैं उसको क्या कहे. x equals -1 इनपुट करते हैं तो क्या आता है, y की वैल्यू हमारे पास आती है -m over -1, and y turns out to be m from this. And from the second case, when x equals 1, we get y equals -m over 1, and y turns out to be -m. So the 2 points that I'm getting from this is this are -1 and m, and the other one is 1 and -m. These are the 2 points that we are getting. Now we need to figure out which one of these 2 points is valid. So how do we think about this now? इनमें से कौन सा आंसर हम कंसिडर करेंगे, कौन सा नहीं कंसिडर करेंगे? That is what we need to figure out. Okay, so let's think about this now. Y coordinates m है, yeah. So we have m and c both positive. M and c are both positive. अब हम आंसर तो m की टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो अब हमें तो नहीं पता कि m पॉजिटिव होगा यहाँ पे या नहीं होगा. हम ये कर सकते हैं, yeah. So one thing we could do is we could find the value of c. Yeah. So ये पॉइंट जो है ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी तो लाई करता है ना. ये जो y equals mx plus c लाइन है इसके ऊपर भी तो लाई करता है. इसमें इनपुट करके हम ये चेक कर लेते हैं c की वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है.
दैट्स वन आइडिया वी could use here, क्योंकि ये पॉइंट P स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी तो लाई कर रहे हैं ना। वो स्ट्रेट लाइन क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है y equals mx plus c. लेट्स इनपुट इन दैट। y equals mx plus c में हम इनपुट करते हैं ये दोनों पॉइंट्स। y equals mx plus c में अगर हम पहला वाला पॉइंट इनपुट करते हैं, दैट गिव्स अस m equals m into -1 plus c। और अगर हम सेकेंड वाला इनपुट करते हैं, दैट गिव्स अस -m equals m into 1 plus c. The first one gives us c equals 2m. The second one gives us c equals -2m. अब देखिए m is supposed to be positive, right? और c भी पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड वाले केस में अब देखिए अगर m पॉजिटिव है तो c नेगेटिव हो जाएगा। उसने कहा है कि दोनों पॉजिटिव है, उसने कहा m and c both are positive। तो इसका मतलब ये है ये सेकंड वाला केस जो है ना ये नहीं हो सकता। So only the first case is going to be valid. फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आ रहा है? x coordinate -1 और y coordinate m. So this is what we are going to consider as our correct answer. ये आपके p के कोऑर्डिनेट्स हैं, -1 एंड m। -1 जो x की वैल्यू जिसमें आ रही है वो वाला कंसिडर करेंगे, दूसरा वाला नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस। तो आपको ये फिगर आउट करना था बिकॉज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर इज अ सिंगल पॉइंट p, मल्टीपल पॉइंट्स नहीं आ सकते, मल्टीपल आंसर्स नहीं आ सकते। तो आपको देखना था कि कौन सा वाला वैलिड होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, let's look at the second part now. It says this normal to the curve at p intersects the curve again at the point q. Find the coordinates of q in terms of m. Acha. So now again we have this curve, right? हम इस तरह की curve बनाई थी। It looked like this. Remember, it's a reciprocal function. तो ये अक्सर इनफैक्ट हमेशा क्या होता है, ये मल्टीपल पार्ट्स में आ रहा होता है। तो एक पार्ट, एक कर्व हमने ये बनाई थी, मोस्ट लाइकली एक पार्ट इसका कहीं और होएगा, हो सकता है इस तरह से कहीं हो। तो इस तरह जो नॉर्मल बनेगा वो दोबारा कर्व के दूसरे पार्ट को जहाँ पे कहीं पे जाके कट कर रहा होगा। तो उसने कहा ये पॉइंट जो है ना ये क्यू है, ये पॉइंट पी था, ये जो नॉर्मल यहाँ पे बनेगा वो कर्व को दोबारा कट करता है उसके दूसरे पार्ट को कर्व के कहीं पे, और उस पॉइंट का नाम क्यू है। हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, अब हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हम ये करेंगे, नॉर्मल निकालेंगे पॉइंट पी के ऊपर। पॉइंट पी के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे आएगी? What are the coordinates of P now? -1 and m. We have figured them out in the first part. The coordinates of P are -1 and m like this. ठीक है? How do you find the equation of the normal? We have a point. हमें gradient चाहिए होता है. That's the second thing that we need. Point P के ऊपर derivative की value क्या आ रही थी? dy by dx is this, right? m over x square. Let's use that. dy over dx is m over x squared. ठीक है, अब क्या करें? इसके अंदर आप इनपुट कर दें x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है p के ऊपर? -1। इससे हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा p के ऊपर। -1 इनपुट करते हैं तो क्या आता है? dy by dx is m over -1 squared, and that turns out to be m. This is the gradient of curve at the point p. What about the gradient of normal? Gradient of normal क्या आएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। That's -1 over m. That's the gradient of the normal. All right. In fact, we did not really need to do all of this because हमें पहले से पता था। Yeah. So हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, हमें पहले से पता था tangent gradient m था, right? तो normal gradient 1 -1 over m हो जाता, हमें करने की जरूरत नहीं थी। So we have to just get rid of this. This is extra working, not needed. इसके बगैर भी आप कर सकते थे। आपको पता है tangent का gradient m था, तो normal का क्या होएगा? -1 over m होगा, right? So what about the equation of the normal? Equation of normal हमारे पास देखते हैं क्या आती है। Equation of normal,
y minus y1 equals m into x minus x1. Remember m यहाँ पे gradient के लिए stand करते हैं, gradient यहाँ पे -1 over m है. So इस m को और इस m को confuse नहीं करना, these are different m's. y1 is m, so that's y minus m equals gradient की जगह पे क्या input करेंगे, -1 over m into x minus x1, which is -1, so that's x plus 1. Let's simplify this. M यहाँ पे multiply कर दो, that gives you my minus m squared. On the other side, we have minus x minus 1. And that gives us x plus my equals m squared minus 1. आप बेशक उसी फॉर्म में भी रहने देते हैं. That's actually better because हमें simultaneously solve करना है. Curve की equation क्या थी? Y equals minus m over x. We could also put that here. We could do it both ways. Yeah, चलो ठीक है. ये हमारे इस normal की equation. Okay, so we have the equation of the normal now. That's x plus my equals m squared minus 1. ठीक है, ये आती है. Yeah. अब हम क्या करें? नॉर्मल जो है ये दोबारा कर्व को इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट Q. तो क्या करें, नॉर्मल कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें. व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ द कर्व? द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y equals m or in fact minus m over x. That's the equation of the curve. You just have to solve these two simultaneously. ठीक है, तो क्या करें इसके लिए, ये जाके इसमें इनपुट कर देते हैं. And that gives us x plus m into minus m over x plus m squared, no sorry, equals m squared minus 1. Let's simplify this. X से multiply कर दें, हमें मिलेगा x squared minus m squared. On the other side we have m squared x minus x. Take all terms to one side. That gives us x squared minus m squared x plus x minus m squared equals 0. And this is the quadratic equation that we are getting from this. Okay. अगर हम उल्टा करते हैं, हम y को बनाते सब्जेक्ट, तो उससे भी हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनती. Think about that. X की जगह पे वो डालते 1 over y. Yeah, that would have been similar difficulty level. इसको अब हमें देखना है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे. Let's think about this. X squared minus m squared x. It's not possible to factorize this as well. इसको quadratic formula use करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आएगा, quadratic formula use करके m की terms में आ रहा होगा, and that's going to be pretty complicated. Okay, so इसको क्या किया जाए? Can we factorize this somehow? इसको factorize हम कैसे कर सकते हैं? अगर x common लेते हैं यहाँ से तो हमें बचता है x minus m squared. Oh yeah, so that works. So we could actually factorize this. इसमें so one possibility is इसको quadratic formula use कर सकते हैं, right? लेकिन quadratic formula में मसला ये होगा कि काफी complicated हो जाएगा. Square root के अंदर m squared आ रहा होगा. But this is actually something that can actually be factorized. Remember, you've done this in O levels. 4 terms आपके पास, इसको factorize आप इस तरह से कर सकते हैं. इसमें देखें, अगर आप x common ले लें first 2 terms में से, that leaves you with x minus m squared. And if you notice, यहाँ से अगर हम +1 common लें तो यहाँ से भी हमारे पास x minus m squared ही बचता है. And that helps us factorize this quadratic equation, and that becomes x plus 1 into x minus m squared equals 0. And that gives us 2 possible values of x here. Either x equals -1 or x equals m squared. अच्छा, x equals -1 तो हमें पता है पॉइंट P के ऊपर है, वो वाला पॉइंट तो नहीं चाहिए. नॉर्मल का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर्व के साथ ये पॉइंट P है ना, ये वाला तो नहीं चाहिए, हमें दूसरा पॉइंट चाहिए. दैट्स द पॉइंट Q. सो ये वाला तो P है, राइट? ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए. इसका x कोऑर्डिनेट m स्क्वायर्ड आ गया.
इसका corresponding y coordinate कैसे आएगा? इसके अंदर input कर दें. And you get the corresponding y coordinate as well. So you have y equals minus m over x. X की जगह पे क्या आ जाएगा? M squared. And that gives you minus 1 over m. So the coordinates of the other point of intersection of the normal and the curve, therefore turn out to be m squared and minus 1 over m. These are the coordinates of the point Q that we were looking for. Okay, now it was actually slightly tricky at this point. So you have to be able to figure out here कि इसको factorize कर सकते हैं. देखिए 4 terms हैं quadratic formula में input करके काफी complicate हो जाता, right? Quadratic formula से करके काफी complicate हो जाता. So इसको factorize करके it becomes much simpler. Okay, quadratic formula भी आप try कर सकते हैं. So one of you suggested that quadratic formula से भी हो सकता है. Just for the sake of completeness, let me just try this. If it works, let's see. My guess is कि शायद ज़्यादा complicate हो जाएगा, but let's see. अगर हम यहाँ पे देखें minus m square plus 1, so yeah, so we can actually factorize that as well, but that's not going to be helpful. Minus m squared. Okay, वो भी शायद simplify हो जाता है. Quadratic formula यहाँ पे apply करते हैं तो क्या होगा? Minus b, so that's going to be minus into minus m squared plus 1. Plus minus square root of b squared, so that's minus m squared plus 1 whole squared, minus 4 into 1 into minus m squared, whole divided by 2 into 1. You could try doing this as well and see if it simplifies. M squared minus 1 plus minus square root of minus m squared plus square, that's going to be m raised to the power 4 minus 2m squared plus 1 plus 4m squared whole divided by 2. And now this becomes pretty complicated. You have m squared minus 1 plus minus square root of m raised to the power 4 plus 2m squared plus 1. Okay, so now you need to be able to figure out कि ये perfect square है. यहाँ अंदर आप factorization कर लें तो ये actually बन जाएगा m square minus 1 plus minus square root of, यहाँ अंदर आपके पास एक perfect square बन जाएगा. You can write it like this: m square plus 1 the whole squared whole divided by 2. And then the square and square root get cancelled, and you have m squared minus 1 plus minus m squared plus 1 whole divided by 2. And you either get m squared minus 1 plus m squared plus 1 divided by 2, or you get m squared minus 1 minus m squared minus 1 divided by 2. The first one gives you 2m squared over 2, that's just m squared, and the second one gives you minus 1. And yes, we get the same two values of x from this as well: x equals m squared or x equals minus 1. However, this was much more complicated. If you're able to factorize this there, that's much quicker. All right. ठीक है, इस पे आपको पता है फिर ये -1 मिले तो p है, दूसरा आपसे q देगा, इसका आप आगे इवैल्यूएट कर लेंगे, q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. All right, I hope that was helpful. That's it for today. Tomorrow we will be doing paper 3, variant 3 of the session. Or per Friday को we'll be doing 2 S1 papers, उनके जो मुश्किल वाले questions हैं, और Saturday को 2 M1 papers हैं इंशाल्लाह. ठीक है, और फिर Saturday के बाद हम सिर्फ P1 और M1 कर रहे होंगे for the next week. जब P1 और M1 आपके हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम P3 और S1 कर रहे होंगे. All right, that's it. I'll see you again in the next session tomorrow. Allah Hafiz.